One or two people have done this problem and nobody has sent. So I told you, suppose you have an unpolarized light, right? You have an unpolarized light, intensity is given, that is how much? 2I0. Then you have a polarizer. This is your polarizer P. Okay. And path axis of polarizer is along vertically. Okay. This is the path axis. Then you have further another quarter wave plate. You have a quarter wave plate, right? And the path axis or optic axis of polarizer, sorry, quarter wave plate is actually making angle. How much angle? This is the path axis or optic axis of your quarter wave plate. Okay. And this is making angle 45 degree with respect to what? With respect to the path axis of polarizer P. Then what you have to calculate? You have to calculate that intensity of emerging ray. That is how much? That you have to calculate. So as we know that when unpolarized light, this is actually what? This is unpolarized light that is given. When this unpolarized light is passes through a polarizer, the intensity of output ray will be how much? That will be I know. Exactly half of initial value. Okay, now this light will be what? It will be polarized, right? And the direction of oscillation of electric field of this polarized light will be in which direction? So this is the direction of oscillation of electric field of this light. And this is actually parallel to what? Path axis. Now, when this ray is incident on this quarter wave plate, what will happen? It will split into two components. One will be parallel to what? One will be parallel to optic axis. This will be called what? This will be your which ray? This will be your E ray. Now, suppose the amplitude of oscillation of incident ray, that is E naught. Okay. So the component that is parallel to optic axis, the component of amplitude parallel to optic axis will be how much? So this will be your E ray, right? Its amplitude will be how much? It will be E naught. So it will split into two components. One will be parallel to optic axis. So this component will be how much? It will be exactly E naught cosine of 45 degree. Okay. And you will have another component that will be perpendicular to optic axis. And this will be called what? It will be O ray. And its amplitude will be how much? It will be E naught sine of 45 degree. So this is the incident case. This is the amplitude of incident E ray, and this is the amplitude of incident O ray. Now, when these two rays are passing through this quarter wave plate, what will happen? There will be phase difference between these two rays. Okay. That phase difference, let us assume that is delta. And delta value actually we know. That will be how much? For quarter wave plate, it will be pi by 2. So when two rays, E ray and O ray, passes through quarter wave plate, so there will be phase difference between these two rays. Okay. It will create some phase difference between two rays. That will be how much? Delta. Delta will be how much? That will be pi by 2. So what I can write? That I can write the amplitude of emerging ray. Amplitude of emerging ray. That we have discussed. That will be how much? So net amplitude, let us assume E. So just we will apply this formula like Young double slit. We have done this kind of thing. So your two rays are superimposing. So resultant amplitude, how we used to write? We used to write like E naught sine 45. Then you have to take that exponential I delta term also, because this will tell whether that two rays are actually making constructive interference or destructive interference. And then you have another component that is E naught of cosine 45 degree. क्या ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को? How I am writing this resultant amplitude of emerging ray? Is this part clear to all? Is this part clear to all? So yes, two rays are making superposition, right? One is called E ray, another is called O ray. Okay, so you have to take resultant amplitude since they are making superposition, right? So you have to take resultant amplitude, that will be sum of the two amplitude.
and this is actually vector sum. Why this is vector sum? So this term actually decide whether it is constructive interference or destructive interference. If phase difference between two rays are of the order of pi, 3 pi, then this term will give how much? This term will give you the value of -1. Then this will tell you this will be the destructive interference. If the phase difference between two rays are of the order of 0 to pi, then this will be simply summation. So then this factor is basically telling that these two rays are making constructive interference. So this factor is really important. Okay, you have to introduce this factor because this factor will tell you whether it is constructive or destructive interference. So this is the resultant amplitude. Now for quarter wave plate, delta is how much? That will be pi by 2. So what will be the value of exponential I pi by 2? Anyone? कितना होते हैं? No, this is not on. Yesterday there is minor mistake. So we know exponential I pi by 2 कितना होगा? Anyone? That will be simply I. Please check that. Okay. So I can write what I can write. I can write E naught. Sin 45 is how much? That will be √2. So E naught by √2. Then you will have exponential I pi by 2. That will be I. Then you will have E naught into cosine 45 degree. That is nothing but 1 by √2. So this is the resultant amplitude. Now we know that intensity is nothing but mod amplitude का स्क्वायर. ठीक है. अब सपोज मान लो आपके पास एक वेक्टर है a इक्वल्स टू a प्लस आई बी. तो मॉड मॉड ए कितने होते हैं? मॉड ए कितने होते हैं बेसिकली? So if I apply this formula, basically how much I'll get? I'll get E naught by √2 का square plus E naught by √2 का square. So this is basically inside that square root. And you have mod square, so you have to take square also. You have to do square also. So if you do this, you will basically get I equals to simply E naught ka square. Okay. And E naught is basically what? E naught is the amplitude of incident ray. So E naught, I can write. So incident intensity is how much? Basically I naught. Incident amplitude is how much? E naught. So I can write E naught is proportional to, I naught is proportional to E naught square. So it means the amplitude of emerging ray here, that will be how much? Simply I naught. Okay. So when this ray is basically, when the polarized ray having intensity I naught is passing through this quarter wave plate, there will not be any change on intensity. So it will be exactly I equals to I naught. So when this polarized ray is passing through this quarter wave plate, there should not be any change in intensity. Is this clear to all? Yes, sir. Okay. So let us solve one more problem, then we'll go to that diffraction. Okay. Shall I erase this part? Yes, sir. Okay. Then next problem. Next problem is like, suppose again you have a polarizer P. Okay, and its path axis is along this direction. Okay, you have another polarizer Q. Okay, and its path axis is actually the path axis of Q polarizer is actually perpendicular to the path axis of P polarizer. Okay, so this is basically path axis. This is actually path axis. Okay, now there's a quarter wave plate. There is a quarter wave plate. Okay,
and the optic axis of quarter wave plate is basically making angle 45 degree with respect to what? With respect to the path axis of polarizer P. So this is the optic axis of quarter wave plate. Let us give small name. Now a ray having a unpolarized ray having intensity I naught is incident on this polarizer P. The unpolarized light having intensity I naught is incident on polarizer P. So what will be the intensity of emerging ray that you have to calculate? Okay, as we know, when this ray is passing through this polarizer, intensity will be how much? कितना हो जाएगा? बताओ? That will be I naught by 2. Okay. Now, when this ray is passing through this quarter wave plate, will there be any change? Yes. Sorry, your voice is not clear. Can anybody tell what he is trying to say? आप लोगों का आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. Can you able to hear me? My voice is audible? Yes, sir. No, not. I am not getting what you are trying to ask me. Shall I continue? Yes, Okay, sir. let me continue. If you have any question, you can ask me because I am not getting what are you trying to say. Okay, so this intensity will be I naught. Now, can you please tell me what will be the intensity here? जब ये रे आपका क्वार्टर वेव प्लेट से पास होगा कितना इंटेंसिटी होगा? अभी कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने. That will be how much? यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? I naught by T. Sorry, I naught by 2. ठीक है. अब जो रिजल्टेंट वेव है उनका ऑसिलेशन का डायरेक्शन किधर दिखाएंगे हम? So the ray or that polarized light, how will show that oscillation of field here? What type of oscillation you will have here? Anyone? बताओ. तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, बेसिकली आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बनेगा. इट विल बी व्हाट? इट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड, है ना? किस तरह की बनेगा आपका? सर्कुलरली पोलराइज्ड बनेगा, राइट? Because this is quarter wave plate. Now, if this circularly polarized light is passing through this polarizer, how much will be the intensity? कितना हो जाएगा बताओ? According to Malus law, कितना होना चाहिए? तो देखो, एक्चुअली इसका आधा हो जाएगा. यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा उसका आधा होगा. क्यों? क्योंकि हर एक आपका ऑप्टिक सॉरी पास एक्सिस किधर है? इधर है. तो सपोज मान लो कोई आपका रे है, कोई आपका इनमें से एक रे है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी पॉसिबल है. ठीक है ना? इधर आपको कुछ मिलेगा. जो आपका रे है जिसका ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है परपेंडिकुलर टू पास एक्सिस, कैन यू गेट इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस? विल नॉट गेट. व्हाई? बिकॉज आई विल यूज दैट मैलस लॉ, आई प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कोसाइन स्क्वायर थीटा. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या है? हर एक डायरेक्शन में आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन एवरी डायरेक्शन. So I am taking a single direction. Let us assume that electric field is oscillating in this direction. So ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका पास नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है? कोसाइन 90, that will be 0. So that will not be able to pass. Okay. अब जो आपका रे है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, that is parallel to pass axis, it will be completely pass. Okay. Now, suppose the electric field is making angle theta with respect to pass axis. Suppose the electric field is making angle theta with respect to pass axis. So, this polarizer will allow only which component? That component that will be allowed
parallel to path axis. Okay. So if you calculate that, you have just what you have to calculate. You have to calculate total intensity. How will calculate? I naught cosine square theta d theta 0 to 2 pi divided by 0 to 2 pi d theta. I mean, you have to calculate for all possible theta. कितना possible है theta यहाँ पे? 0 to 2 pi, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर भी ऑसिलेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में कर रहे हैं. So how much intensity you will get? That will be the average value for all 2 pi from 0 to 2 pi. Okay. So that's why you will get here that intensity will be how much? That intensity will get here. That will be I equals to exactly half of the intensity of incident ray. So already you have I naught by 2. Okay. So it will be again half. So it will be basically I naught by 4. सर हाँ. सर ये क्यू वाला एक और बार रिपीट करें. I'm repeating it. Okay. Tell me in which direction the path axis of Q polarizer is. That is perpendicular to the path axis of P polarizer, right? So I'm taking this is as a path axis of Q polarizer, that is perpendicular to the path axis of P polarizer. Now यहाँ पे जो आपका रे बनेगा किस तरह की बनेगा? Here that you will get, although you are getting polarized light, but that electric field will oscillate in all possible directions. So it will create like a circle. So although this ray is actually polarized, but what kind of polarization is this? This is a circularly polarized light. Now this is the path axis of Q polarizer. Now the electric field is making, that electric field of incident ray is making angle of what degree? So we'll get various kind of angle here, right? So कुछ rays ऐसा होगा, that will be parallel, that will be perpendicular to path axis, है ना? कुछ rays इनमें से ये भी है जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है that is perpendicular to path axis. So it will not be allowed. ये आपका पास नहीं कर पाएगा, है ना? अब इनमें से कुछ रे ऐसा भी है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किधर है? पाथ एक्सिस के पैरेलल है. सो दैट रे विल अलाउड. मतलब ये जो रे है इनमें मिक्स है. फोटोन क्या है? मिक्स है. कुछ फोटोन्स का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू पाथ एक्सिस, उसका पैरेलल टू पाथ एक्सिस, एंड देयर आर अदर थीटा आल्सो पॉसिबल. इनमें इस केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री है. कुछ के लिए 0 डिग्री भी पॉसिबल है, एंड ऑल अदर थीटा इज एक्चुअली अलाउड. ठीक है ना? सो सपोज ये रे इज मेकिंग थीटा एंगल. सपोज एक इनमें से कोई एक आपका फील्ड है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज मेकिंग थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पाथ एक्सिस. सो दिस एम्पलीट्यूड, कितना एम्पलीट्यूड इसमें से पास होगा? दैट विल बी द ई कोसाइन थीटा, ई नॉट कोसाइन थीटा. दैट कंपोनेंट कैन बी पास. आई मीन सारे एम्पलीट्यूड पास नहीं हो पाएगा. कितना पास हो पाएगा? ओनली ई नॉट कोसाइन थीटा. ओके. So basically, how will calculate that intensity of emerging ray? So you have to take E naught square cosine square theta. You have to integrate this because the theta, there are various kind of thetas are possible here. And what kind of theta is possible? That is possible from 0 to 2 pi. So you have to take average value. And how we used to calculate that average? कैसे आप एवरेज कैलकुलेट करते हो? एफ ऑफ थीटा का एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग? एफ ऑफ थीटा ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं ना. एफ ऑफ थीटा डी थीटा 0 to 2 pi divided by 0 to 2 pi d theta. So this formula you have to apply. Why? Because there are various thetas are possible here, and that theta can be ranged from 0 to 2 pi. And then for average you have to take again 0 to 2 pi d theta. Now if you calculate this, you will get how much you will get. तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना था आपका? आई नॉट था. इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कितना थे? ई नॉट थे. सॉरी यहाँ पे आई नॉट नहीं थे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना थे? आई नॉट बाई 2. एंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई नॉट. तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे आप, सो यू विल बेसिकली गेट आई नॉट बाई 4. सो प्लीज चेक. So whatever, if this ray is circularly polarized and if this ray is incident on any
polarizer, the intensity of output ray will be half of the intensity of incident ray. So you have to keep in mind. Just you have to apply that Malus law. It's a very simple thing. Okay, is this clear? सर अनपोलराइज लाइट का तो सेम ही होता सर. हाँ, अनपोलराइज्ड लाइट के लिए, हाँ अनपोलराइज्ड लाइट के लिए भी आपका सेम ही हो जाता है. करेक्ट. Why for unpolarized light it is same? Because again for unpolarized light also there are various kind of theta are possible, right? So that's why you will get similar kind of pattern. I mean, again for unpolarized, if this ray is unpolarized, for this ray also there are various kind of thetas are possible, right? So that's why you will get a half of the intensity if this ray is unpolarized. And also if this ray is circularly polarized, then again there are various kind of theta are possible. So that's why you will get again half of the initial intensity. So you are correct. If this ray is unpolarized, you will get the half of the intensity. Okay. So this question recently asked in your JAM exam. Okay. So they asked what will be the ratio of I divided by I naught. That was your that was the question. So it will be how much? I by I naught करोगे कितना मिलेगा आपको? 1/4. So this is the part of polarization, and a small part is left, that is detection of polarization. That I'll do later because it's not important for exam. It's a very simple and short topic. But on important topic for JAM exam, that is detection or diffraction. So let us start diffraction. क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? एक एक करके बताओ. शेखर, राजकिशोर, राममोहन. Yes, Yes, sir. I'm expecting all people are getting what I'm trying to say, right? Every people. Are Yes, you sir. enjoying? Okay, so let us start diffraction. Okay. So first we'll discuss what is diffraction. So first we'll see that observation. We'll see that observation. Okay. Suppose you have a opaque object. This is your opaque object. And you have a source of light here. And this is your screen. This is your screen. Then this, what do we know? We know that light is always follow the path of straight line. Then what we are expecting? We are expecting that this light will go like this. ठीक है, this is our expectation, right? Light straight line path को follow करता है. So this will be the region. This region on the screen will be illuminating, right? So it means this portion of that screen will be what? Bright, and this portion will be shadow. This is our expectation, right? क्यों? क्योंकि light always travel in a straight line. But what is the observation? What is what we have observed in the experiment? We have observed that light will not always travel in a straight line path. Light will not always travel in a straight line path. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि हाँ, ये वाला पार्ट आपको क्या मिल रहा है? स्क्रीन पे ब्राइट मिल रहा है. ठीक है, ये वाला पार्ट आपको ब्राइट मिल रहा है. दैट्स फाइन.
बट जो आपका रे है, आपका एज पे स्ट्राइक कर रहा है, जो रे आपका ओपेक ऑब्जेक्ट का रे एज पे स्ट्राइक कर रहा है, this ray is not traveling in a straight line. So this ray is actually entering that forbidden region. जो रे आपका एज पे टकरा रहा है वो आपका स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. इट इज एक्चुअली एंटरिंग दैट शैडो रीजन. सो ठीक है, ये आपका सपोज मान लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन. तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि इस रीजन में क्या नहीं होना चाहिए, आपको कोई लाइट पास नहीं होना चाहिए. क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो रे आपका एज पे स्ट्राइक कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली एंटरिंग दैट शैडो रीजन ऑन दैट स्क्रीन. ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व दैट दिस रीजन कंटेन bright and dark fringe. So there will be bright, then dark, then bright, then dark, so on. So एक आपका रीजन देखा जा रहा है जहां पे आपका क्या है, पैटर्न है. ये तो आपका इल्यूमिनेटिंग रीजन है. यहाँ पे क्या है, आपका ब्राइट दिख रहा है. इधर आपको क्या दिख रहा है, डार्क दिख रहा है. बट एक पोर्शन में क्या दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन ऑफ दैट स्क्रीन बेसिकली कंटेन ए सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज. ओके, is this clear what I'm saying? So when light strike on that edge of opaque object, it will not travel in a straight line. It will be bent. It will be bending. Okay. So it is observed that there is no hard boundary between illuminating region and shadow region. इनके बीच में कोई sharp boundary नहीं है. इनके बीच में क्या है? It contains a series of bright and dark fringes. Okay. So from here you can write that phenomena of diffraction. What is diffraction actually? Diffraction is nothing but bending of light. Bending of light when it strike the edge of opaque object. Bending of light when it strike the edge of opaque object. Okay, because this portion cannot contain any fringes or any light. But experimentally, what we observe, this portion also contains that light or fringes. So diffraction is nothing but bending of light at the edge of opaque object. Okay, this is observation number 1. This is observation number 1. Okay. Then you have another observation. Then you have another observation, that is observation number 2. Okay. So suppose you have a circular, suppose you have a plate. In a plate, you have a small size circular aperture. Okay. This is your plate, and this is your screen. This is your screen. Okay. Also separation, although that separation between that plate and screen, that is large. D is large here. Okay, D is large. Now this side you have a source of light. Okay, and the size of aperture here small. So this is all the criteria of diffraction. That आपका जो aperture का size है वो आपको small होना पड़ेगा, और diffraction phenomena को आपको अच्छा देखने के लिए separation between this plate and screen, that should be large. Okay, separation between this plate, or you can say slit also, separation between slit and screen, that should be large. So what you are expecting when this ray is actually passing? When this ray is actually passing, so what is your expectation? That this ray will travel through this, it can pass through this aperture, right? Because this is nothing but a hole. Then the expectation is like that there will be some portion on that screen that will be bright. आपका expectation क्या है कि ये वाला portion आपका bright होगा कुछ portion, और बाकी portion क्या होना चाहिए आपका, dark होना चाहिए. क्यों dark होना चाहिए बताओ?
हाँ राममोहन बताओ क्यों डार्क होना चाहिए? क्योंकि सर वो क्योंकि जो लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है सर। एग्जैक्टली सो यहाँ से जो आपका लाइट जाएगा तो आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मतलब कुछ आपका पोर्शन जो आपका लाइट पास हो रहा है उसी वो वाला पोर्शन क्या होगा, स्ट्राइक करेगा स्क्रीन पे, तो वो वाला पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, एंड बाकी पोर्शन क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। बट दिस इज नॉट ट्रू। जब आपका ये होल और एपर्चर का साइज लामडा के बराबर होगा, लामडा क्या है, दैट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, तब आपका ये रे आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। सो बेसिकली दिस विल बी, इट विल बेंड। सो सपोज मान लो आपका जो रे आपका इस एज पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन पे आपका रे आ रहा है ना, इंसिडेंट रे आ रहा है। अब जो रे आपका इस एज पे स्ट्राइक कर रहा है, ये सारे एज है ना, ये सारे पोर्शन एज है। यहाँ पे जो रे स्ट्राइक कर रहा है, इट विल नॉट ट्रेवल थ्रू स्ट्रेट लाइन, इट विल बी बेंडिंग। क्या करेगा, ये बेंड करेगा, है ना, हर एक जगह से बेंड होगा, जहां पे भी एज में आपका स्ट्राइक करेगा वो बेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली यू विल गेट बिग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक सेंट्रल ब्राइट, and size of this central bright will be bigger than the size of the whole. Why? Because at the edge what is happening, that ray is actually bending, so obviously you will get large size central bright. In addition, you will have a series of dark and bright fringe. तो क्या ऑब्जर्वेशन किया गया है, देखा गया है कि सेंट्रल ब्राइट जो मिल रहा है उसका साइज दैट इज लार्जर देन द साइज ऑफ एपर्चर। ऑल्सो आपको क्या मिला है, इट कंटेन्स सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, मतलब आपका ब्राइट मिला है फिर डार्क, अगेन we observe that there is another bright. So this screen contain, there is an alternative fringe, bright dark bright dark. Why this is happening? Because light is now no longer traveling in a straight line, it is actually bending. That's why you are getting this kind of phenomena. So from this discussion we conclude that light will not always travel in a straight line. When it is traveling through a size, it is traveling through aperture having size of the order of wavelength, then it will be bending. Also when it strike the edge of opaque object, then it will also be bent. So this is all the phenomena of diffraction. So diffraction is nothing but the bending of light when it passes through a small size aperture or when it strike the edge of opaque object. Is this clear what I'm saying? When that light is passing through aperture having small size or it strike that edge of opaque object, then it will not travel in a straight line, but it will be bending. So bending of light when it passes through small size aperture or strike the edge of opaque object, then this phenomena is known as diffraction. So this is the introduction part. Okay, now we'll discuss that Fraunhofer diffraction. We'll discuss Fraunhofer diffraction. For single slit. First we'll discuss about that single slit, then double slit, then we'll go to that nth slit. Okay. Okay. So Fraunhofer diffraction for single slit. Okay. So you have a slit. You have a slit S. Okay. And the size of the slit. The size of the slit, let us define, that is A. A is the size of the slit. Okay. Then you have a screen. Separation between slit and screen, that is capital D. And also to get good diffraction pattern, that D should be what? D should be large. To get good diffraction pattern,
the separation between slit and screen, this is your screen, that should be large. Then you have a source of light here. So this is your source of light. Okay. Let us define, this is S1 because symbol is same. So this is your S1. Now, as you know that light is passing through straight line, then what we are expecting that this light will pass and it will follow that straight line path. So only this portion will be bright on that screen. Okay, and other part will be dark, because this concept we know that light is passing through straight line, but this is not true, because there should be some diffraction phenomena, right? So whatever light is passing through the edge, whatever light is passing through that edge of this slit, that will be bent. क्या होगा यहाँ पे आपका bent हो जाएगा, ठीक है? तो ऑब्जर्व किया गया, जो आपका ऑब्जर्वेशन मिला है, सपोज मान लो आपका लाइट पास हो रहा है स्मॉल साइज स्लिट, जो ए है, the size of this slit is so small that is of the order of the wavelength of light, lambda is the wavelength of light. Okay, then experimentally क्या देखा गया है कि आपको इंटेंसिटी जो मिल रहा है, इंटेंसिटी पैटर्न, इट इज लाइक दिस. What experimentally observed, the intensity pattern is like this. Okay, so this region, the center region is actually having highest intensity. So this is actually your central bright. This is actually your central bright, and the intensity of central bright is I naught. This is your first bright. The intensity of this first bright is I naught by 22. Okay, this side also, this is also first bright. The intensity of this first bright is I naught by 22. Okay, and then you have second bright. Okay, this is I naught by 66. This is also second bright, I naught by 66. Okay, I naught by 66. And this is your first dark or first minima, second minima. This is first minima, second minima, so on. So this is the observation. So according to our expectation, this region only be the bright and others should be dark. But experimentally क्या देखा गया है कि जो स्क्रीन है, सेंटर पार्ट क्या है, ब्राइटेस्ट है, then you have dark, then again bright but low intensity, then again dark, again bright. So both साइड दिखा गया है, अपर साइड में भी इस तरह की पैटर्न है, लोअर साइड में भी इस तरह की पैटर्न, ठीक है, ये देखा गया है. अच्छा, एक पार्ट और है यहाँ पे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए आपका जो सोर्स होता है और जो स्लिट होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है आइडियली? What will be the distance between source and slit for Fraunhofer diffraction? Anyone? कितना होना चाहिए आइडियली? It should be infinite, right? It should be infinite. क्यों? क्योंकि आपको रे को जो है पैरेलल करनी है, ठीक है. अब इसको आप पैरेलल कैसे कर सकते हो? इस रे को पैरेलल कैसे कर सकते हो? अगर सपोज मान लो आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है और आप सोर्स को एफ डिस्टेंस पे रख दिया है, मतलब दैट लोकेशन ऑफ दिस सोर्स इज एट फोकल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस. तो फिर यहाँ से जो आपका रे जाएगा है ना, यहाँ से जो रे पास होगा, इस साइड आपको किस तरह की रे मिलेगा? दैट विल बी पैरेलल, राइट? So to make this parallel ray, you have to introduce a convex lens also, and the position of this source should be at the focal point of this convex lens to make this ray parallel. Okay, ठीक है ना. अब यहाँ पे भी आपका जस्ट स्लिट के सामने ही एक आपका कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे भी लगाया जाता है. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लगाने से आपका स्क्रीन पे जो यहाँ से जो रे पास होगा, तो स्क्रीन पे क्या करेगा? फोकस करेगा, ठीक है. इट विल फोकस दैट रे, ठीक है. तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, यू हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, देन यू हैव ए कॉन्वेक्स लेंस. यू हैव टू पुट दिस सोर्स at the focal point of this convex lens to make this ray parallel.
अब रे ये जो रे पैरेलली पास हो रहा है स्लिट से. To make good diffraction pattern, the size of this slit should be small, and that should be of the order of wavelength of light. Okay. Also, to make good diffraction pattern, the distance between source and screen, that should be large. D should be large, and you have to keep on convex lens in front of slit S1. Okay. Why? Because when this ray will pass through this convex lens, it will focus this output ray at the screen. To make the output ray, okay, output जो ray है उसको focus करने के लिए आपको convex lens लगाना पड़ेगा. And the distance between this convex lens and the screen, that distance is basically f. F is the focal length of this lens. ठीक है, ये आपका just introduction part है Fraunhofer diffraction का. So Fraunhofer diffraction is nothing but diffraction of light. So we, according to our expectation, since light is passing through that straight line, so we should get the central portion is bright and other points should be dark. But experimentally, it contains a series of bright and dark fringes. So this is because of bending of light. Now we'll derive that. I will derive this separation. जो ये width होता है ना, ये हम derive करेंगे कि central bright का width कितना होता है. Let us derive that part. Okay. ठीक है. So first we'll discuss about that central bright. First we'll discuss central bright. Okay. So this is your experimental setup. This is your experimental setup. This is the screen. Okay. And you have a source of light here. Okay. Sorry, S is source of light. S1 is your slit. A is the size of aperture. Okay. And D is the separation. ठीक है. अब यहाँ से जो रे पास हो रहा है आपका, तो जो लाइट यहाँ पे आ रहा है, इसका वेव फ्रंट किस तरह की होगा? The wave front of this ray will be like this. So जो आपका स्लिट में जो आपका वेव फ्रंट आएगा, it will be like this. And according to Huygens principle, each point on the wave front will behave like a secondary source of light. So as we know, light source will produce spherical wave front, right? यहाँ से जो आपका रे पास होगा किस तरह के होगा? It will produce spherical wave front, and each point, this is your wave front, each point on this wave front will behave like a secondary source. So what I can say like this portion or this slit will have many number of light source. तो यहाँ पे सपोज मान लो आपका 100 नंबर ऑफ लाइट रे पास हो रहा है. ठीक है. अब मैं सेंट्रल ब्राइट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल पॉइंट. ठीक है, सेंट्रल पॉइंट की बात कर रहा हूँ. सपोज मान लो यहाँ पे आपका 100 नंबर ऑफ सोर्स है. ये सोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि लाइट जो पास होते हैं वो बेसिकली स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं, और ईच पॉइंट इज बिहेव लाइक ए सेकेंडरी सोर्स. सो ईच पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं? एक सेकेंडरी सोर्स मान सकते हैं. Now for the sake of convenience, let us assume that this portion or this whole contains 100 number of light sources. ठीक है. अब जरा बताओ, जो आपका इस एंड पोजीशन में है, यहां से आपका लाइट कहां जा रहा है? सेंट्रल पॉइंट पे जा रहा है ना. और स्लिट का अदर एंड से जो लाइट जा रहा है, मतलब एक नंबर सोर्स और 100 नंबर सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बताओ? सेंट्रल पॉइंट. So what I have assumed, this slit contain 100 number of sources. So at this end I am assuming that source number 1, and other end I am assuming source number 100. So what will be the part difference between this
number on source and number 100 source at central point. कितना पर difference होना चाहिए? That will be 0. Okay, so they will make constructive interference, right? So because of that we will get bright region. Now again, if you consider second source and 99 number sources, what will be the part difference between two rays at central point? Again it will be 0. So again, number 2 source and number 99 source, they will make constructive interference and they will produce bright point at central point. Now if you choose number 3 source and 97 number source, again the part difference between two rays will be 0 at central point. So they will again make constructive interference and it will produce bright point. So due to that, all superposition or constructive superposition, what we will get at central point, we will get bright intensity. So here at this point, we will get bright intensity. So you can say, you can mention here that central point will be bright. Okay, and intensity will be highest. Intensity will be highest. Where? At central point. Because all sources are basically making constructive superposition here, constructive interference. So that's why you will get this point bright and having highest intensity. Okay. So this is your about central bright. Okay. Now where will be the location of first dark? कहाँ पे होगा? So again I am using same thing. You have a slit, here and you have a source here. Now I am assuming this is your central point. I am assuming at a distance above I, this point Q, this is your central dark. And also I am assuming the distance between P and Q, that is I. Distance between P and Q, that is I. Okay. And this thing, you know, that slit width, that is small a. Okay, this ray is going there, right? From this end, you will have a ray. It is striking here. Also from other end or other edge, ray is striking this point, right? Ray is striking this point. So now let us define, this is the middle point of slit. This is the middle point of slit, and I'll draw a horizontal line here. Okay. Now, if this angle, please see that which one is theta actually. If I draw a line from that central point to point Q, and if I denote this is your theta, this is your theta. ठीक है. अब सपोज मान लो, फिर मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से जो स्लिट से आपका कितना नंबर ऑफ रे पासेस हो रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 100 नंबर ऑफ रे पासेस हो रहा है. ठीक है. तो रे नंबर 1 और रे नंबर 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? हाउ विल कैलकुलेट दैट पार्ट डिफरेंस? यू हैव टू मेक ए नॉर्मल. आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू मेक ए नॉर्मल. नाउ इफ द साइज ऑफ दिस स्लिट इज स्मॉल ए, व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रे एंड 100 रे? कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए? दैट विल बी a sin थीटा. दैट विल बी a sin थीटा. ठीक है. अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर a sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा हो तो फिर क्या मिलेगा आपको? Q पॉइंट विल बी डार्क. कैसे इसको प्रूव करोगे? कि if the part difference between ray number 1 and ray number 100, if this part difference is a sin theta, how will calculate part difference? This is like a your interference thing, right? Interference में कैसे करते हैं हम? सोर्स नंबर S1 और S2 दोनों को जोड़ देते हैं. अब उनके बीच में पार्ट डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं? हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, है ना? सो दिस विल बी द एक्स्ट्रा पाथ दैट इज ट्रैवलिंग बाय दिस रे, द 100 नंबर रे. सो इफ दिस पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, then you will get central bright or Q point will be dark. Why? Because कैसे इसको प्रूव करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. इट्स अ लॉजिक एक्चुअली. देखो,
ठीक है, इस स्लिट को आप आधा कर लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, स्लिट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो ऊपर वाले पोर्शन से कितना नंबर ऑफ रे पासेस हो रहा है? मैंने किया है जिनका कि दिस स्लिट इज बेसिकली having 100 number of sources. जो if you divide this split into two parts, each having equal length. So ऊपर वाला पोर्शन से कितना नंबर ऑफ सोर्सेस है? ऊपर वाला पोर्शन में how many sources are there here? 50 number of sources, right? नीचे वाले पोर्शन में भी कितना नंबर सोर्सेस है? It will also have 50 number of sources, right? ठीक है, अब जरा ये बताओ कि रे नंबर ऑन और रे नंबर 50 ऑन के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? कितना होना चाहिए बताओ? What will be the part difference between ray number on and ray number 50 on? So just I have divided this slit into two parts. This will be a by 2, this will be a by 2. It contains 50 number of sources. It also contains 50 number of sources. Now I am asking if the part difference between ray number 1 and ray number 100, that is a sin theta. So what will be the part difference between ray number 1 and ray number 50 on? कितना होनी चाहिए बताओ पार्ट डिफरेंस? वेरी सिंपल, ये लेंथ कितना आ गया आपका? ये लेंथ आपका क्या आ गया? a by 2 आ गया, राइट? जब आप रे नंबर ऑन और रे नंबर 50 ऑन के बीच में पार्ट डिफरेंस देखोगे, कौन सा लेंथ लेना पड़ेगा आपको? हाफ, राइट? दिस नाउ दैट पाथ द डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी a by 2, ठीक है? तो a by 2 हो जाएगा, ए वाला आपको देखना पड़ेगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये साइज कितना आ गया आपका परपेंडिकुलर, सॉरी बेस कितना आ गया आपका? यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? आप लोगों को क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? No, sir. टू रिपीट, सेंट्रल पॉइंट क्यूब राइट होता है वो वाला समझ में आया आप लोगों को? सर सबको समझ में आया सेंट्रल ब्राइट? ओके, अब देखो इसको कैसे करोगे। तो दिस इज योर स्लिट, ठीक है? दिस इज योर स्क्रीन, ठीक है? दिस इज योर स्लिट, दिस इज योर स्क्रीन। अब सेंट्रल पॉइंट मैंने एज्यूम किया, दिस इज योर सेंट्रल पॉइंट पी। अब मैंने बोला क्यू पॉइंट जो होगा वो डार्क होगा, है ना? ये सेपरेशन कितना है? वो आई है, ठीक है? ठीक है, यहाँ से कितना नंबर ऑफ रेज आ रहा है? हाउ मेनी सोर्सेस आर देयर इन दिस स्लिट? कितना नंबर ऑफ सोर्सेस है? 100 नंबर ऑफ सोर्सेस है, राइट? ठीक है, अब यहाँ से जो फर्स्ट सोर्स है, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ो, क्यू पॉइंट को, और सोर्स नंबर 100 को जोड़ो इसके साथ, ठीक है? तो ये अगर आपका ये है, सपोज दिस इज योर ए, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे? यू हैव टू मेक ए नॉर्मल, राइट? यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल, परफेक्ट नॉर्मल। तो ये वाला है आपका a sin theta. If you draw that normal, you will get part difference of ray number 1 and ray number 100. That part difference will be how much? A sin theta. Okay. Now, if this is part difference between ray number on and ray number 100, so now my question is, what will be the part difference between ray number 1 and ray number 50 on? कितना होना चाहिए बताओ? कैसे करोगे? आप इसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, स्लिट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है? तो वेरी सिंपल थिंग, आप इस 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये वाला पोर्शन कितना नंबर ऑफ सोर्सेस है? इसमें अपर पोर्शन में 50 नंबर ऑफ सोर्सेस है, लोअर पोर्शन में कितना नंबर ऑफ सोर्सेस है? इसमें भी 50 नंबर ऑफ सोर्सेस है। तो दिस कंटेंट ऑन टू 50, दिस कंटेंट 50 ऑन टू 100. नाउ माय क्वेश्चन इज, if what will be the part difference between ray number 1 and ray number 50 on? कितना होना चाहिए बताओ? तो a के जगह पे A by कितना? 2 sin theta. by 2 sin theta. a by 2 sin theta. तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है a sin theta इक्वल टू कितना है?
ये साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा है। तो अगर बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो फिर क्या मिलेगा, a/2 साइन थीटा इक्वल्स टू λ/2। तो रे नंबर 1 और रे नंबर 51 इनके बीच में पार्ट डिफरेंस एक्चुअली कितना है, λ/2। तो दो रे के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2π/λ into λ/2। So this lambda will be cancelled, 2 will be cancelled. So basically you will get part difference between ray number 1 and 50 on, that will be how much, that will be pi. So they are basically out of phase. अगर दो रे आपका दो रे के बीच में फेज डिफरेंस पाई है, so they will basically make what, destructive interference. So ray number 1 and 50 on, they will be cancelled, they will be cancelled। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में destructive interference हो रहा है। Similarly रे नंबर 2 एंड रे नंबर 52 इनके बीच में अगर कैलकुलेट करोगे फेज डिफरेंस, अगेन यू विल गेट पाई। सो दे विल कैंसिल, ये दोनों का कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल होगा। सिमिलरली इफ यू चेक दैट, वैसे आप चेक करते करते अगर चेक करोगे कि 50 और 100 इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच में भी फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा। सो दे विल कैंसिल। सो ऑल रेज whatever rays are there, sources are there here, so all will be cancelled here। यहाँ पे सारे का क्या होगा, basically they will basically make destructive interference। so that's why you will basically get Q as a dark point। ये कब है, कंडीशन ये है कि जब रे नंबर 1, मतलब इस एज में जो आपका सोर्स है और इस एज में जो सोर्स है, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, ठीक है ना। तब आपका क्यू पॉइंट क्या बनेगा, आपका डार्क बनेगा। तो यू कैन से दैट फर्स्ट डार्क, व्हेन यू विल गेट फर्स्ट डार्क, और यू कैन से दैट पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, so a sin of theta 1d, first dark मतलब theta 1d, that should be how much, that should be lambda। अब theta तो बहुत छोटा रहता है ना, theta is basically so small, so in place of sin theta I can write theta, so theta on d that should be lambda by a। so this is the angular position of first dark fringe, theta on d is the angular position of first dark fringe। you can calculate this position of first dark fringe in terms of y also, because this is actually the separation or position of first dark fringe, that is basically what, that is y। so just I can write for small theta, what I can write, sin theta equals to tan theta, I can write, right? so tan theta on d, that will be nothing but lambda। now what is tan theta actually, tan theta कितना होता है, so I can write tan theta is nothing but perpendicular, if you draw a triangle, if you draw a triangle like this, 1 minute, if you draw a triangle, suppose this is your middle point, now if you draw a triangle like this, so this is your basically what, base, this is theta, this is perpendicular, so in place of tan theta I can write y by capital D, that should be equal to lambda, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y on D, position of first dark, that will be d lambda by a, okay, d lambda by a। so this side you will get on dark, ठीक है ना, ये आपका सेंटर है, तो इधर भी आपको एक डार्क मिलेगा, दिस सेंटर पॉइंट इज सेंट्रल ब्राइट, क्यू पॉइंट, ओके, यहाँ पे आपको एक डार्क मिल रहा है, तो सेंटर पॉइंट की इधर भी आपको एक डार्क मिलेगा, उनका भी पोजीशन क्या होगा, उनका पोजीशन बताओ, y minus 1d, that will be how much, minus d lambda by a, ठीक है। तो सेंट्रल जो ब्राइट है उसका विड्थ कितना होगा, सेंट्रल ब्राइट का विड्थ कितना होना चाहिए बताओ, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, डेल्टा विल बी हाउ मच,
width of central right. That will be I on D minus I minus on D. So that will be 2D lambda y. ठीक है ना? ठीक है. तो गुड डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? ठीक है. So to see that good diffraction pattern, delta should be large. ठीक है. अब डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड है? देखो, size of aperture. A was size of your aperture, right? So if you make A small, then delta will be large. Okay. If delta is large, then you can say you are getting good diffraction pattern. So to make good diffraction pattern, A should be small, capital D, distance between slit and screen, that should be large, and wavelength also you have to take wavelength, large wavelength. Okay, you will not get good diffraction pattern in X-ray. Okay, X-ray के लिए lambda कितना होता है? छोटा होता है, right? So you will not get good diffraction pattern for X-ray, but you will get good diffraction pattern in visible light, right? So this is your diffraction. How much time? कितना time more देखो? Will be over. Time is over, right? Okay, so you should stop here. Okay, from कल यहाँ से प्रोसीड करेंगे. ओके. Okay, sir. Good night, sir. Okay. Good night, sir.